हम तो हमेशा जिंदा रहेंगे, बेशक ये जानवर मर जाए, ये कीड़ा मर जाए, ये पतंगा मर जाए, इंसान तो क्या अशरफुल मखलूकात है, अशरफुल मखलूकात है। और शर्ते कि आप एहतराम करें इस खूबसूरत कुदरत का जिसका हमें खुशकिस्मती से हिस्सा बनाया गया है। तो लिहाजा ये एक तो किन लेवल्स पे हमें तब्दील करना है। और मैं सिर्फ आपसे 3 मिनट और दूंगा क्योंकि 15 मिनट मेरे दिए गए थे, अब तक मैंने 12 मिनट इस्तेमाल किए हैं। और खबरदार कि आपने मुझे कोई पर्ची पास 3 मिनट कोशिश करूंगा कि क्या कहा गया था कि हम किन तरीकेकार से हम आगे बढ़ सकते हैं। आई मीन एक तरफ ये मैंग्रोव्स के लिए पाकिस्तान फख्र कर सकता है कि हम मिसाली स्ट्रेटेजी हमने कायम की। मैं इस पर दाद देना चाहता हूं IUCN को और बिलखसूस सलमान मार्कर कबराजी को। तो हमें फख्र होना चाहिए कि पाकिस्तान की जानिब से एक इतनी अहल खातून हमने पैदा किया कि पूरे एशिया के रीजनल ऑफिस की ये डायरेक्टर हमने इनको एक्सपोर्ट कर दिया। लेकिन हम हक रखते हैं कि इनको री इम्पोर्ट भी कर देंगे वापस किसी वक्त, ताकि हमें भी इसका फायदा डायरेक्टली हो। लेकिन हमें फख्र इस बात पर है कि IUCN एशिया के गाइडेंस के साथ पाकिस्तान में वेदर इट इज रफी साहब, वेदर इट इज चीमा साहब, तारिक कुरैशी, द होल IUCN टीम working out of our country, Office Shamraj Saab, who is our country representative, we assembled a strategy and a framework for action which has been used by other countries. दूसरे कंट्रीज ने हमारे नक्शे कदम पर चलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारे अपने नक्शे कदम एज यूजुअल स्ट्रेटजी बनाने में क्या बात है, उन पर अमल करने पर हमारी कमजोरी है। और इस अमल को मजबूत बनाने के लिए कम से कम 7 मैंने ऐसे आइडेंटिफाई किए जिसमें से कोई चीज आपको याद तो रहेगी नहीं, लेकिन मैं गिन देता हूं ताकि रिकॉर्ड में चीज आ जाए। 7 एक कि हर फर्द कुछ न कुछ कर सकता है। ये किसी स्पेशलिस्ट का काम नहीं है कि जी रफी साहब क्योंकि मैंग्रोव में उन्होंने पूरी जिंदगी गुजार दी, या कोई फिशरमैन है बेचारा, या कोई ठेकेदार है, ये इसका काम है। यार हमारा क्या काम, हम तो रहते हैं गुलिस्तान या हिजरी में या नॉर्थ नाजमाबाद में, हमारा क्या डायरेक्ट ताल्लुक। दैट इज द ग्रेटेस्ट मिसअंडरस्टैंडिंग। शख्स कहां भी रहे उसका ताल्लुक बनता है। तो आप अपने अपने शोबे में, चाहे आप पोस्ट ऑफिस में क्यों ना काम करते हो या किसी मीडिया यूनिट में, आप भी कुछ कर सकते हैं इस इशू पर। और दूसरे एतबार से जिस तंजीम या इदारे के साथ आप वाबस्ता हैं, उसी तंजीम के अंदर, उस इदारे के अंदर इसके बारे में शऊर बढ़ाया जाए। चाहे वो स्कूल हो जिसमें स्कूल प्रिंसिपल को बताना चाहिए कि क्या चीज है मैंग्रोव्स, या चाहे कोई कॉर्पोरेशन हो। तीसरी सतह है अपनी आबादी, जिस मोहल्ले में आप रहते हैं, जिस गली कूचे में आप रहते हैं, अपने पड़ोसी से कभी पूछ लें, भाई अगर आपके पास 15 मिनट हो तो मैं आप पर आकर आपको अच्छी मीठी नींद सुला देता हूं, मैं आपको मैंग्रोव्स की कहानी सुनाता हूं। तो अपने कम्युनिटी में भी इससे बहुत कुछ किया जा सकता है। चौथी सतह पर हमारा पसंदीदा मीडिया, जो कि एक एतबार से बड़ी खिदमत की है, बड़े अहम मौजूआत पर उन्होंने अवेयरनेस बढ़ाई है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो टेरेबल सिस्टम है रेटिंग एजेंसीज का, तो सबसे ज्यादा मकबूल प्रोग्राम है टॉप शोज, जैसे कि वो खुद एक नेबुल बदल हो गए हैं सोच के लिए, अपनी इंफरादी सोच के लिए। मुझे याद नहीं आ रहा है कि अहम तरीन ये जो प्रोग्राम चलते हैं प्राइम टाइम में, कभी भी ऐसे मौजू को लेकर वो मरकज बनाया जाए गुफ्तगू का और तबादला ख्याल का और डेटा का। सारा वक्त बयानबाजी, उसने ये कहा, उसने मैंने ये कहा, मेरी जमात अच्छी है, तुम्हारा सदर खराब है और मेरा वजीर आजम सबसे अच्छा है। दिस काइंड ऑफ इनेम टॉक विच कैन बी डन आफ्टर मिडनाइट, बट 8 to 9, 10 to 11 इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। लेकिन बाद प्रिंट मीडिया को दाद देनी चाहिए कि उन्होंने बाकी में इसमें अवेयरनेस बढ़ाने में बहुत मदद की है। और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने भी, चाहे वो नेशनल जियोग्राफिक चैनल्स हों, चाहे बात चैनल्स हों, बात दफा उन्होंने डॉक्यूमेंट्री न्यूज रिपोर्ट्स भी दी हैं। लेकिन अभी भी गुंजाइश है मीडिया का रोल अवेयरनेस बिल्डिंग एंड मोटिवेशन में बढ़ाने की। फिर
is the level of policy making. यहाँ लिखा तो गया है पॉलिसी मेकिंग, लेकिन इस वक्त यहाँ सबसे जो मौजूद तबका है हमारे माशरे का, सबसे शरीफ तबका हमारे MPA और MNA और हमारे सियासतदानों से ज्यादा नेक कौन हो सकता है? एक किस्म का सियासतदान मैं खुद हूँ, तो इतना इसीलिए मैं आपको नेक नजर आ रहा हूँ। लेकिन कोई मुझे आज यहाँ MPA और MNA और सेनेटर नहीं नजर आ रहा है। उन पर भी ये मुसल्लत करना चाहिए स्टैंडिंग कमेटी ऑफ सिंध असेंबली को इसका जुज प्रेजेंटेशन की कोशिश कर, क्योंकि वो असल बनाते हैं पॉलिसी, और पॉलिसी मैनेजमेंट फिर शमसुल्लाह मेनन साहब जैसे सिविल सर्विस के, हमारे गवर्नमेंट ऑफ सिंध के वगन साहब जैसे साहब जिन्होंने फॉरेस्ट्री पे इतना अच्छा प्रेजेंटेशन किया, डॉक्टर जफर साहब बैठे हैं DDMA से। एंड फाइनली पब्लिक इंस्टीट्यूशंस ऑफ ऑल काइंड, दोज व्हिच आर चार्ज्ड विद interacting with the people, public institutions, whether they are education institutions, universities, civic schools, and lastly at the international level, because unfortunately we remain so dependent on aid and aid and aid that these multilateral forums do have an influence on local policy and national policy. But thank you very much for your attention. I wish you the best. I think we can use this conference for purposeful action. Thank you, Director. It was indeed wonderful, and I'm sure it was very, very motivating. And you already gave us the points to work on, and you rightly said that every one of us can do something about it. And that is the reason why we had this conference. Many of us are not directly related to conservation or development projects or organizations, but we all can do something, and we all are now ambassadors for these mangroves who are requesting our help to survive. So this is going to be very interesting to be in the future with that perspective. Now I would like to invite Dr. Zafar Iqbal Kadir, Chairman, National Disaster Management Authority, to come and share his point of view, and particularly because of his own interest in forests and with the long association that he has, particularly in Balochistan, and he would join us to share his remarks on the subject. Dr. Zafar Iqbal Kadir. It's indeed very difficult for me to speak this evening, especially after such a moving and inspiring talk by Mr. Javed Iqbal. This is a conversation on how do we need to think about mangroves. They are essential. Certainly. I'm sure you must have had a lot of exposure to knowledge this afternoon. I wasn't lucky enough. I just forget you. I came today from Islamabad. Got here a bit late. But nonetheless, it's good that I'm still here with you, learning so much about the mangroves, about ecosystem, and about the web of life as put forth by Mr. Javed Iqbal. Well, the issue of the data has already been touched upon by so many speakers, I'm sure. One having cover of 600,000 hectares of mangrove forest in Pakistan, now having reduced to some around 100,000 hectares, and most of it is along the Sindh coastline, whereas the Balochistan part of the coastline initially remained barren, except for a few small patches in the state of Andhra. I'm not sure what that's enough. I
I remember when I visited the water as Chief Conservator of Forest in 1999, there was hardly any activity done until that time. While we had the Forest Department operational up and running in 1971. That was when we started working on mangrove forestation throughout the district and part of the Kerala. And today I am sure Tulisan has taken quite a leap forward in nurturing those mangrove forests and also on the same time stabilizing sand dunes in the Mangroves. As we all know, the coastal communities, the fishermen, the grazing society living along the coastline are mainly dependent on the mangroves. The well-being of communities is directly proportional to the well-being of mangroves. Without realizing their local significance, as the Savage Award was very widely prioritizing their per acre market worth, the local communities unfortunately continue to use them as fuel wood and fodder. In urban areas, as you pointed out, the industrialists or the contractors, construction companies, they try using mangrove wood for building material, which is a category. Ladies and gentlemen, from an ecological perspective, mangroves are a unique and significant ecosystem. They support a diverse range of plants, wood and palms, trees, shrubs, and even birds, which have developed unusual adaptation to the prevailing environmental conditions. They provide stability to the whole ecology of the region. In fact, these plants, not only plants, but also other living species like birds and fish, have been so successful in their development that mangroves are among the most productive natural system on the globe. Mangroves are used by a vast array of organisms as breeding, nursery, and feeding area. They also play a valuable role in coastal protection, reduction of erosion, and protection from cyclones, and lessening the impact of storms and tsunamis. And a variety of bird species is really a treat to watch. In addition to its aesthetic and ecological importance, mangrove has a definite role to play in reducing the risk of disaster. That is one of our primary concerns for the government of Pakistan. We are a country most exposed to natural disasters on the earth today. Be it for whatever reason, but the reality is we need to work on every possible intervention that helps us reduce the risk of disasters. And mangrove is one single important factor in saving us from cyclones, storms, and tsunamis. Mangroves serve as a bioshield against all coastal hazards, and they are essential source of livelihood for most of the people living along the coast. That is precisely the reason why NDMA is supporting such interventions through all possible means and ways at all possible levels. So much so that NDMA has even gone into implementation support of the mangrove policy in some part of the country. We have supported plantation of 100 hectares of mangrove in this Megawat in the last 2 years. We have developed a nursery of 6,000 mangrove plants. We have developed communities, organized them in the region, who are involved to carry out post-plantation maintenance functions, awareness raising, and capacity building of the local population, local communities, school children on mangrove conservation. The project has achieved 4 milestones.
one of the most important milestones